सरफेस एनर्जी को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन इज वर्क डन इन चेंजिंग द एरिया पर यूनिट एरिया. वर्क डन इन चेंजिंग द एरिया पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन के बराबर होती है. तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज द यूनिट? जूल पर मीटर स्क्वायर. That is the definition of surface energy, but it is actually the energy density, that is the energy of the surface per unit area. So कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में एक बार यूनिट जरूर चेक कर लेना, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज आस्क्ड टू यू, राइट. सो नाउ जो सरफेस एनर्जी होती है विच आई विल से इन जूल इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया, राइट. लाइक इफ वी हैव ए ड्रॉप, then the energy of the surface is surface tension into 4 pi r square. If we have a bubble, this is for drop, and if we have a bubble, अगर एक बबल है तो then इसमें दो फ्री सरफेस हो जाती है. So then surface energy is T into 4 pi r square, that is for one surface into 2. So 2 surfaces हो गई. अगर हम एक ड्रॉप को मल्टीपल ड्रॉप्स में ब्रेक करते हैं तो ओवरऑल एरिया इंक्रीज होता है. एक ड्रॉप को हमने मल्टीपल ड्रॉप्स में ब्रेक किया तो ओवरऑल एरिया इंक्रीज होता है, तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होती है. वॉट एवर वर्क वी डू टू ब्रेक द ड्रॉप इनटू मल्टीपल ड्रॉप, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सरफेस एनर्जी, दैट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, right. And if the drop is breaking down on its own without any external work, then the internal energy of drop will convert into surface energy. Internal energy means the temperature of the drop will decrease. The reverse is also true. If number of drops combine to form a big drop, if number of drops combine to form a big drop, so then surface area decrease and the surface energy increase. If this process happen on its own, अगर ये process अपने आप हो रहा है, then what will happen? The temperature of the drop will increase.